Dear students, today we are going to study Unit 2 of FC3 paper पाठ्यक्रम संचालन प्रक्रिया। शिक्षार्थी भेदरे पाठ्यक्रम को किपरि ट्रांसलेट करवा ए संपर्क में पढ़िबा। As we know that to achieve the aims and objectives of education, curriculum is important. At the same time, to achieve the objectives of curriculum, it is very important to translate the curriculum in a proper and systematic manner. कहिबार अर्थ है पाठ्यक्रम को उपयुक्त परिचालन न कले पाठ्यक्रम उद्देश्य हासिल हो पारिबो नाही। We have already discussed the guiding principle of NCF 2005 and by following this guiding principles आमे पाठ्यक्रम को परिचालन करि परिबा जहा द्वारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अधिक एक्टिव और मीनिंगफुल करि परिबा जहा द्वारा पिला माने पाठ बुझिबे, पाठ को मने रखिबे और डेली लाइफ रे प्रयोग करि परिबे। आमे जते बेले पिला माने बा शिक्षार्थी कहि थाओ we meet all the students. The students, maybe he or she belongs to a SC or ST community, a girl child or a disabled child or a normal child or a very intelligent child or a child belonging to a minority group. And curriculum is prepared with respect to all the students because all the students are equal. That's why curriculum is prepared with respect to all the students. We have already read about the inclusive education in FC2 paper in first year. We also know that curriculum is prepared taking into consideration about the inclusive education. Now let me have a brief discussion regarding inclusive education. What is inclusive education? Inclusive education means all children in the same classroom, in the same school, in the same environment. Traditionally, the group of students who are excluded, not only the children with disability, but the SC/ST children, girl children, children speaking other languages, minority group children, all these children are excluded to study with the normal children. But inclusive education says students of any background bring to the classroom. Inclusive education provides a fair chance to go to school, learn and develop the skill they need to thrive. Inclusive education says every child has a right to quality education and learning. So each and every child has a right to get education and they have the right to study in any school, in that particular environment. From this diagram, we'll get a clear view regarding inclusive education. This first picture shows exclusion. This means that the students like the SC/ST community students, girl students, disabled students, they are excluded to take education along with the normal students. They are excluded from the community. They are not allowed to get education. Then the exclusion was abolished, then it was turned into segregation. This means the students were not allowed to teach and study along with the normal children. They are segregated and they are taught in separate schools. For example, disabled children like
visually impaired or hearing impaired children, they have special schools and they get education in that school. So they are segregated from the society. Then the integration came into being. In this system of education, the excluded student or the segregated students, they get their education in the same environment, in the same school, but they are not allowed to sit along with the normal children. They are taught in separate classrooms by separate resource persons. But now the inclusive education says, as all the children have the right to education, that is quality education, so they are able to study in the same school, in the same classroom, in the same environment with their age appropriate. So the inclusive education says all children will play, learn and grow together in the same school, in the same classroom, in the same environment. All the children have the right to get education, that to quality education. तेबे आमे जानिले each and every child has the right to get education. SC, ST, disabled girl पिला माने अवहेलित और पछुआ वर्गर पिला माने एमाने भाषा, संस्कृति, शिक्षा, सामाजिक चलनी, बासस्थान और बसति दृष्टिकोण अवहेलित और पछुआ एही सबु वर्गर पिला मानकर पाई आमर कॉन्स्टिट्यूशन रो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 रे कहा जायछि the state to make any special provision for the advancement and of backward classes of citizens or for the scheduled caste and scheduled tribes. So for the SC and ST children, the state can make any type of special provisions for their advancement and development. Special reservation or quotas are given to this SC and ST category children. A set of percentage of seats are reserved in all universities and college for students, particularly those who belong to SCBC, SC, ST and OBC category. Similarly, in Article 21A provides free and compulsory education of all children in the age group of 6 to 14 years. This article makes education a fundamental right. So each and everybody has the right to education. Within the age of 6 to 14 years, every child could get free and compulsory education. In Article 46 of the Constitution also states that the state shall promote with special care the educational and economic interest of the weaker section of the society, and in particular of the scheduled caste and scheduled tribe, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation. So the state will take special care of this category of people so that they won't be exploited, and also to protect them from social injustice. Apart from this, government had also provided certain schemes for the upliftment, for the development of this SC and ST category of students. सेगुड़िक है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, आश्रम स्कूल, गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल, free books and uniform, low cost hostel. First, pre-matric scholarship. Pre-matric scholarship is a broad category of scholarship that offer financial assistance to students from class 1 to 10. Actually, this pre-matric scholarship is given to the students to reduce the dropout.
during the transition period, when they pass the elementary examination and they go for secondary education, at that time many SC and ST students they drop out. So to reduce the dropout, this type of scholarship is provided as a support to the students, as a monetary support to the students, so that they will stay and carry out their education. Similarly, establishment of ashram school. आश्रम स्कूल रे पिला माने रही पाठ पढ़िबा सह मागणा खाद्य अन्यान्य सुविधा सुजोग पाई थांती। से भलिया गवर्नमेंट स्पेशल हॉस्टल्स मध्य तैयारी करछि एससी और एसटी ट्राइब गर्ल्स एंड बॉयज मानक पाई। फॉर एग्जांपल कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय रे 75% एससी और एसटी झियो माने रही पाठ पढ़ुचंती। एही वर्गर पिला मानक पाई फ्री बुक्स एंड यूनिफॉर्म्स आर आल्सो गिवन फ्रॉम द गवर्नमेंट। एज पर द राइट टू एजुकेशन एक्ट, students of government schools are entitled to receive free books, stationery items and uniforms up to class 8. Free hostel facilities for Khodia, Mankodia, Lodha, Bonda community students, especially for the SC and ST category of people. Free hostel facilities are done by the government. Even facilities are there of low cost hostel, so that some of the SC and ST students could stay there and study. एही सबु SC ST वर्गर पिला मानक पाई करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड कला बेले कि दिग प्रति ध्यान देवा आवश्यक। जेपरी भाषा और जीवनशैली, से वर्गर पिला मानकर व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्यबोध, संस्कृति, पर्वपर्वाणी, धर्म विश्वास, दैनंदिन कार्यावली और उपार्जनक्षम कार्यक्रम, संस्कृति और जीवनशैली। फर्स्ट रे भाषा और जीवनशैली। स्कूल रे टीचर पिलार मातृभाषा को यूज करी ट्रांसलेट कले पिला मध्य टीचर को सहित ट्रांसलेट करि परिबो और तार डर मध्य रहिबो नाही। से फ्रीली तार थॉट्स आइडियाज को शेयर करि परिबो। दैट्स व्हाई व्हाइल डिसाइडिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम मातृभाषा को गुरुत्व देवा उचित। आवर कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो सेज दैट ए स्टूडेंट शुड कंप्लीट हिज प्राइमरी एजुकेशन इन इट्स मदर टंग। नेक्स्ट इज व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्यबोध। कल्चरल एंड सोशल values are very important to develop the personality of a child. So these values should be given importance while deciding the objectives of curriculum. Next, संस्कृति, पर्वपर्वाणी और धर्म विश्वास। एही वर्गर पिला मानकर आंचलिक संस्कृति, पर्वपर्वाणी, धार्मिक विश्वास को आधार करी लर्निंग एक्टिविटी डिजाइन कले पिलाटीर शिक्षण सुगम हुए। करिकुलम रो ऑब्जेक्टिव्स को निर्णय कला बेले तार कल्चर, फेस्टिवल उपरे गुरुत्व देवा उचित। नेक्स्ट रे दैनंदिन कार्यावली और उपार्जनक्षम कार्यक्रम। एही वर्गर लोक माने कोन काम करती सेगुड़िक पाठर अंतर्भुक्त कले पिलार शिक्षण सहज हुए। नेक्स्ट संस्कृति और जीवनशैली। तांको अंचलर सोशल लीडर्स मानकर जीवनशैली, सेवा, त्याग को लर्निंग रे इनकॉर्पोरेट करवा उचित। एही लोक मानक उपरे पिला मानकु प्रोजेक्ट देवा उचित। एही सब वर्गर पिलार संस्कृति और लोक मानकर जीवनशैली को करिकुलम रो ऑब्जेक्टिव्स को
डिसाइड कला बेले गुरुत्व देवा निहाती आवश्यक। तेबे आमे जानिले टू डिसाइड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम एससी एसटी पिला मानकर भाषा, जीवनशैली, व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्यबोध, सांस्कृतिक पर्वपर्वाणी, धर्म विश्वास, दैनंदिन कार्यावली, संस्कृति और जीवनशैली दिग प्रति दृष्टि देवा आवश्यक। तासह करिकुलम संपादन मुख्य परिसर गुड़िक गुरुत्व देवा आवश्यक। सेगुड़िक है नेक्स्ट विद्यालय पाठ्यक्रम। स्कूल रे विषयटी को पढ़ेला बेले लर्निंग एक्टिविटी जदि एससी एसटी पिला मानकर कल्चरल सिचुएशन को बेस करी डिजाइन करा जाए तेबे पिला माने भल भाव में बुझिबे, मने रखिबे और डेली लाइफ रे प्रयोग करि पारिबे। करिकुलम को ट्रांसलेट कला बेले एक रु अधिक भाषा प्रयोग करने उचित। तांकर लोकल लैंग्वेज यूज कले शिक्षण सुगम हुए। समस्त पिला को पाई समान सुविधा सुजोग हेबा आवश्यक। जेपरि एससी एसटी पिला माने या फील न करंतु कि दे बिलोंग टू एन इन्फीरियर कम्युनिटी। पिला मानकर किपरि सोशल और डेमोक्रेटिक वैल्यू रो डेवलपमेंट हेबो ता ऊपर इंपोर्टेंस देवा दरकार। एससी एसटी पिलांकर कल्चर को बेस करी लर्निंग एक्टिविटी डिजाइन करने दरकार। बहुभाषार शिक्षार व्यवस्था करने आवश्यक। नेक्स्ट शिक्षण शिक्षादान कार्यक्रम। इन स्कूल ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस डिफरेंट मेथड्स should be used for effective learning. For example, in science there are different methods like observation and experimentation method. So this type of methods should be incorporated while teaching. पिला मानकर एनालिटिकल पावर डेवलप करने पाई से भलिया लर्निंग एक्टिविटी डिजाइन करने दरकार। शिक्षण शिक्षादान कार्यक्रम समय रे there should not be any discrimination among the students with regards to caste, creed, race, religion or talent. Every student should be equal in the eyes of teacher. पढ़िला बेले पाठ्य विषय वस्तु और शिक्षण सामग्री मध्य जगै देवा उचित। नेक्स्ट भाषा बा लैंग्वेज। लैंग्वेज इज एन वाइटल फैक्टर while transacting the curriculum in front of the students. Their mother tongue is very important. पिलार मातृभाषा बहुत इम्पोर्टेंट कारण पिलाटी तार मातृभाषा को भल भाव में बुझीपारे और से लैंग्वेज रे टीचर सहित ट्रांसलेट करि पारे। सेथिपाई पिलार मातृभाषा शिक्षण शिक्षादान प्रक्रियार माध्यम हेबा उचित। पिलार भाषारू शिक्षण आरंभ होई आंचलिक भाषा मुख्य स्रोत सामिल हेबा उचित। पिला माने जो भाषा रे भल भाव में बुझिबे सेही भाषा को टीचर प्रयोग करबा उचित। So students, today we have studied how to translate the curriculum with respect to inclusive children. Thank you.